4 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हूँ। मैं एक थिएटर फैमिली से आती हूँ और मैंने जब चलना शुरू किया मुझे स्टेज पे रख दिया गया। आई एम अ लोनर एट बेस्ट। आई डोंट स्टेप आउट दैट मच। आई do my work, go home. Are you choosy? नहीं यार, the thing is that very often it's not about being choosy, it's about what you're being offered. आज़ाद हो नाम से, लेकिन क्या आज़ाद हो? यार तुमने बड़ा लोडेड सवाल पूछ लिया। कैमरा बंद करो कि मैं सब बताऊंगी। Only personal questions with Saba. पहला सवाल ये बहुत पर्सनल है। Saba, are you ready? I don't know if I'm ready, but ठीक है बताओ। Who's your gynac? Yeah. I love my gynac. She's amazing. My gynac, मेरी gynac बॉम्बे में है। और मैं एरिया बताऊंगी पर उसके आगे और कुछ नहीं बताऊंगी। वो बांद्रा में है और वो बहुत ही कूल हैं और बहुत अप्रोचेबल हैं और मैं उनसे अजीब और ऊटपटांग सवाल पूछती रहती हूँ और वो मुझे जवाब देती रहती हैं व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, एट ऑड आवर्स। आई लव हर। इट्स लाइक अ थेरेपिस्ट या फिर एक रेस्टोरेंट या फिर एक बार जो आपको बहुत पसंद आए, फिर आप सबको बताते नहीं हो क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर चले जाएंगे। आई एम गेट कीपिंग। यस, आई एम सॉरी। लेकिन आज हम मिले हैं फॉर द शो विद द सेम नेम व्हिच इज Who's Your Gynac, Amazon Mini TV पर। बाय द टाइम दिस इंटरव्यू ड्रॉप्स गाइस, आई हैव अ फीलिंग you'll already have binge watched the show. Is it? Yeah, it's going to be fun. Damn, yeah. So when you guys watch it, of course you will talk to Saba about it online. लेकिन मुझे याद है, when you put out the question on your Instagram page, it caused a furore. मतलब लोग पागल हो गए थे। हाँ. लेकिन my question is not because I understand कि promotions के लिए करना पड़ता है। How did you agree to this? Because didn't you as an actor feel कि यार अगर मैं ये post करूँगी repercussions तो होंगे ही। I want to know how does somebody like you actually make peace with that before putting it out? So truth be told, मुझे नहीं आइडिया था कि people will react like that because why would anyone, any human being, put something if it's actually personal out into the open like that? I didn't think people कि लोग ऐसा सोचेंगे क्योंकि अगर पर्सनल है तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछूंगी यार मुझे गायना का नंबर दे दो। अगर एक्चुअली मुझे गायना का नंबर चाहिए होता मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं पूछती। तो मुझे नहीं लगा था कि लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ इतनी ओपनली मतलब शेयर कर रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बताओ यार तुम्हारा गायना कौन है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप लोगों से, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पर ठीक है, अगले दिन ट्रेलर ड्रॉप हो गया एंड ऑल डाउट्स वर क्लियर्ड। माय गॉड, क्या ये थोड़ा सा नर्व रैकिंग होता है टू बी हेडलाइनिंग अ शो? मुझे ये जानना है बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू आर न्यू टू एक्टिंग. Rocket Boys was a show also that has got phenomenal success. लेकिन जब थोड़ा सा भार अपने कंधे पे आ जाता है, वो भार लगा क्या? पता है that I'm headlining the show ना, मुझे जब मैं आज सुबह यहाँ आई और मैंने ये पोस्टर देखा ना तब तक मुझे सिंक ही नहीं हुआ। तो I think acting or making a film or making a web series is a collaborative process. And I think if you feel like yes there's responsibilities but आप अपना काम करें और आप घर जाएं। आप ये एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंस अगर अपने आप में ले लें तो फिर आप काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरे लिए सब बराबर का काम कर रहे थे और सब एक ही कहानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो मुझे कभी ऐसा एक्चुअली नहीं लगा कि मैं हेडलाइन कर रही हूँ, हम सब एक ही कहानी बता रहे थे। तो ये जो पोस्टर देख के थोड़ा सा हुआ था ना मुझे कि अच्छा, पर हाँ नहीं ऑनेस्टली मुझे नहीं ऐसा लग रहा। जिस हैसियत से मैं सबा को जानती हूँ, आई मस्ट टेल माय ऑडियंस दिस कि आई हैव ऑलवेज अटेंडेड यू सिंगिंग फॉर अस, ओके, एंड मेरे दिमाग में यू ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर। तो ये एक दूसरा एक पहलू है तुम्हारा जो शायद लोगों को ज़्यादा पता ना हो, कैसे हो सकता है। बट एज एन एक्टर भी मुझे याद है हमने बात की थी व्हेन यू आर पार्ट ऑफ मुझसे फ्रेंडशिप कर। तो ये एक्टिंग की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। हाँ बिल्कुल। And today we're here, in 2023. लेकिन क्या लग रहा है इस दौर में कि ऐसे रोल्स जो हैं, कहीं ना कहीं इस दौर में ज़्यादा आ रहे हैं? Because एक तो happy for you, but दूसरा do you think anything has changed? और ये क्यों हो रहा है? हाँ तो I think आपने कहा काफ़ी वक्त से चल रहा है। मैं 4 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हूँ। मैं एक थिएटर फैमिली से आती हूँ और मैंने जब चलना शुरू किया मुझे स्टेज पे रख दिया गया और मैं तब से एक्टिंग कर रही हूँ। तो एक्टिंग इज़ नॉट न्यू टू मी एट ऑल। तो हाँ शायद मेन स्ट्रीम में मैं इतनी नहीं दिखी हूँ। मैं थिएटर करती हूँ और करती आ रही हूँ और करती रहूँगी।
मरते दम तक. और मैंने काफ़ी वेब वर्क किया है, मैंने फिल्में करी हैं, पर perhaps not in the mainstream. So this time, इस वक्त में जो काम मुझे मिल रहा है is possibly the most fertile and amazing work that I've done. Or public. Yeah, or public for that matter. Yes, public for that matter. So, हाँ, this is a great time and not just for me. मेरे हिसाब से सब एक्टर्स के लिए हिंदुस्तान में बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि हमारे पास मीडियम्स बढ़ गए हैं. एक तरफ टेलीविजन है, एक तरफ OTT है और एक तरफ सिनेमा है, और इतना कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है और इतनी स्पीड से कंज्यूम किया जा रहा है दैट डिमांड और सप्लाई में मतलब देयर इज अ नीड फॉर मोर एंड मोर एक्टर्स एंड फॉर फ्रेश फेसेस एंड देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर character actors and there's a respect for people who have come from say theatre or who have been in the game for a long time and perhaps not gotten their due. And they are being seen in phenomenal work, you know, throughout especially OTT and issue में Nurse Violet. yeah, I mean, my God, मेरी favorite character है if you ask me. Nurse Violet is a legend firstly to work with her and मतलब वो तो सिखाती हैं acting, उनके साथ मतलब acting करना was just like wow, is lucking out, you know, when you get amazing co-actors. It's something else. So I think बहुत ही बढ़िया वक्त है इस समय actors के लिए, और I consider myself lucky that I'm a part of this movement. I Whatever think this it's is. amazing. Speaking of co-actors, आप ही के co-actor हैं जिनको Emmy nomination मिला है. जी जनाब. Woo! Yeah, big woo. Let's celebrate that. Big एक woo. second. Jim, ये सब तुम्हारे लिए है. Okay. What does that do to somebody like you? You know, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक possibility है कि आज हम एक ऐसे you know international standard का काम कर रहे हैं और हमारे लिए भी ये dream नहीं है, ये एक possibility है. What are the thoughts that go inside your mind जब ऐसी चीजें होती हैं आपके आसपास दूसरों के लिए? You know, खुशी के अलावा. Yeah, so I think awards are amazing. Yeah. They are, of course, you know, they lead to recognition, they lead to more work, they lead to, you know, good things for the person receiving it. But I think what an award like Emmy looking towards India and Indian content has done is it's opened up the possibility that कि हम कुछ quality काम कर रहे हैं. बिल्कुल. That कि अच्छा तो our work is actually now counted in, you know, equal in the West and in Asia, and you know the world is looking and it's watching, and वो I think काफी exciting feeling है कि अगर आप कोशिश करें और मतलब वही जो पुरानी रट है ना जिसमें शायद हम फंस गए हैं कि हम वही एक ही तरीके का सिनेमा बनाते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो बदल रहा है. आई थिंक स्क्रिप्ट इज द हीरो नाउ, और स्क्रिप्ट को हीरो मान के जो चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में वो आई थिंक आर फॉर द बेस्ट. तो दिस इज अ ग्रेट टाइम यार. मुझे तो आई एम ऑल्सो जस्ट एन ऑब्जर्वर, यू नो, बिकॉज आई हैव बीन इन टाइम्स दैट weren't this. So I've been around for a while. So I've seen the transition from, you know, from that only commercial cinema, big stars, actors to, my goodness, look at the actors we have now. You know. And also, मेरे हिसाब से the female protagonist. Yeah. Female protagonist के ऊपर पहले तो शो बनना. Okay? हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ पर ये possible ही नहीं था. हाँ. तो अब वो हो रहा है. Also female protagonist जो कहीं ना कहीं conventional नहीं है. हाँ. और ये बहुत रिफ्रेशिंग है Yeah. क्योंकि हमारी जो विदुषी है इस हाँ. शो में Yeah. वो बहुत रियल है, वो मुझे लगा. हाँ. ये एक बहुत बड़ा विन है औरतों के लिए, एंड आई थिंक दैट टू बी पार्ट ऑफ दैट चेंज तुम्हारे Yeah. लिए भी बहुत अच्छी बात है. Of course. I think not just female-led stories, but I think किस तरह की कहानियाँ हम बता रहे हैं और कैसी औरतों के बारे में बता रहे हैं कि अब वो सिर्फ जवान खूबसूरत कश्मीर की कली जैसी मतलब कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं हम, मतलब कि बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बस उसका स्कोप वहीं ख़त्म हो जाता है. अब औरतें प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं. अब older women are headlining, you know, women who, you know, जहाँ बॉलीवुड में पहले उनका करियर ही ख़त्म हो जाता था, उनको माँ और बहन के रोल्स में मतलब डेलीगेट कर दिया जाता था, रेलीगेट कर दिया जाता था, वो बदल गया है. एंड आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग. एंड ऑल्सो टू एक्नॉलेज दैट women are driving, they firstly, they're watching. Yeah, so many more women are watching than perhaps men are. And
and that they're driving stories. Barbie And is the biggest example. yeah, they're driving stories. And women are directing, they're women cinematographers, they're female actors leading and writers, and it's, yeah, I think, and it's high time. It's high time. I mean, I wish this had happened before, but dera hai durust hai. Yeah, really, man. Because Yeah. as I said, मुझसे friendship करोगे, it's been a while. Yeah. एक मतलब 10 साल तो बीत ही गए हैं उस हाँ, बात पे. हाँ. And I can't imagine. a ज़्यादा time- यार, 10 साल से ज़्यादा हो गया. हाँ. Okay. Yeah. I can't imagine a time जहाँ पर was there ever a time तुम्हारी जिंदगी में जहाँ पर काम तो आ रहा था, लेकिन वो सबा के लिए it wasn't good enough. हाँ, बिल्कुल. तो मैंने अपनी पहली फिल्म की दिल कबड्डी, जिसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, पर वो थोड़ा लॉलीटा एस कैरेक्टर कॉमेडी था, और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया. फिर मैंने एक फिल्म की मुझसे फ्रेंडशिप करोगे यश राज के साथ. उसके बाद, उसके कई साल बाद तक मुझे लगातार कॉलेज रोम कॉम्स मिले और मुझे नहीं करने थे, तो मैंने नहीं किए. तो मेरे पास थैंकफुली म्यूज़िक था, मेरे पास थिएटर था, मेरे पास डांस था, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ. तो आई वॉज अर्निंग माई लिविंग और मैं वो करी थी क्योंकि मुझे वो नहीं करना था. एंड थिएटर वॉज ऑलवेज अ कंपेनियन टू स्क्रैच माई इट एज एन एक्टर. सो आई डिडंट फील द लैक ऑफ कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ. And web work, dottedly, and short films and whatever, that kept happening. But yeah, I was totally in a dead end, and also you are the mercy of someone else's imagination, right? As an actor, Yeah. आप मतलब कोई आपको देखे और बोले कि हाँ ये शायद उस रोल में फिट होगी, आप उसका इंतजार करेंगे. या तो आप खुद लिखें और खुद डायरेक्ट करें, जो हो रहा है अब. मतलब अब मोर एंड मोर वुमेन आर टेकिंग थिंग्स इनटू देयर ओन हैंड्स. पर या तो आप वो करें, या तो आप वेट करें कि किसी की इमेजिनेशन सडनली किसी की बत्ती जलेगी और बोलेगी अरे यार इसको ना एक बंगाली फिल्म में डालते हैं, कर पाएगी, यू नो दैट. सो I was in a deadlock for sure. I had other mediums to kind of keep me happy and satisfied, Occupied, but yeah. occupied. But I did miss cinema, and I did miss opportunity. And हमसे अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि are you choosy? नहीं यार, the thing is that very often it's not about being choosy. It's about what you're being offered. बिल्कुल. So I wasn't spoiled for choice. Yes, I was getting offers, but they weren't what I wanted. सक्सेस के बारे में मुझे बताओ. दिस इज समथिंग आई आस्क एनीबॉडी हु आई एम इंटरव्यूइंग. अगर मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, जाहिर सी बात है यू आर इन अ प्लेस ऑफ सक्सेस. कुछ तो सक्सेस होगा, लेकिन लोग जो हैं आसपास, दे कंप्लीटली डू अ फ्लिप, अ 360. व्हेन यू एनकाउंटर समथिंग लाइक दैट, क्या कोई बत्ती जलती है? ये अवेयरनेस है कि लोग मुझसे इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज मैं, इज देयर एन एग्जांपल ऑफ परहैप्स एन इंसिडेंट वेयर यू were the same person, लेकिन the public sort of work was not as prevalent as जितना आज है. तो वो कैसे navigate करते हो? ये ना अवेयरनेस मुझे एक्चुअली कई साल पहले आ गई थी मेरी दूसरी फिल्म के बाद, क्योंकि वो उस वक्त सिनेमाज में इट वाजंट लाइक अ बिग डील, बट देन इट बिकेम अ कल्ट काइंड ऑफ क्लासिक, स्लीपर हिट हो गई थी वो. तो मुझे उसी वक्त इस बात का इल्म हो गया था कि people will see you as what they want to see you as. So they'll project their idea of you onto you. And if you buy into their idea of you, it's over for you. बिल्कुल. So who are you when you go back home? When you finish your work and you go back home, are you being able to come back to that center every time you come back home? And if you are, and if you can hold on to that, then you're fine. Otherwise, आपका सब फिर जाएगा. And then it'll go to your head, and then life will give you the knocks that will ground you, So if you can remain grounded, then the knocks and the highs and the lows, they all feel the same. And yes, of course, when I have encountered so much where people I haven't spoken to. I'm an introvert and mildly put that I'm a loner at best. So I don't step out that much. I do my work, go home, and I have a very small group of very amazing friends, and that's enough for me. But when people start coming out of the cracks and being like, hi, and it's not real. I know who my friends are. They were there when, there was nothing. Yeah. And I know they'll be there when maybe there'll be success and there'll be failure again, and they'll still be there. And ये I think focus रहे और काम करो सर नीचे करके, and that's it. What is the hardest thing इस दौर में to be Saba Azad? What's the hardest thing?
यार तुमने बड़ा लोडेड सवाल पूछ लिया. कैमरा बंद करो कि मैं सब बताऊंगी. आज़ाद हो नाम से, लेकिन क्या आज़ाद हो? Heavy, huh? Heavy question. सोच के बताती हूँ. Yeah, because I think that it's a time that you're going to be talking to most people versus the rest of your life right now. And every time there will be a question that you may not want to answer. Is that hard? You know, I've kind of made my peace with it. I think people are morbidly curious about people they admire and they look up to and they want to know everything about them. And by default, those who are in their radius come into the same purview. But I think having the knowledge and self-awareness that it is because of that that they are morbidly curious about you is the one thing that gets you through it. And then you say, okay, it's not really me. And then you're like, yeah, okay. You know, you carry on with your life and say, yeah, it's all good. You carry on with yours, I carry on with mine, and you know, you make your peace with it because it's not going away anywhere, right? Like people's curiosity is not going away anywhere. And either you can beat your head up about it and be depressed about it, or you can say ki, ha chalo, that's part and parcel of being an actor and being in, you know, in the public eye for more than one reasons for me. And I'm now a lot more peaceful with it than I was before. That's amazing. Yeah, That's amazing. yeah. Because it bothers me to be a woman, a Yes. female actor. Yes. And the attention that we deserve for our work Yes. or the stuff that we've done to get where we are Yeah, getting completely nullified. thrown out of the window. Yes, of course. And of I course. think that to me is what I wanted to leave you with. Yes. Because, you know, there are people who see the actor and they should continue to do that because I think that would be the most respectful way for women in general. It's not about you. It's about Especially women towards women. Exactly. For me, that is the clencher, you know, when Yeah. a woman looks at a woman and says, my God, she did do it herself, Yes. that is everything. Absolutely. And when a woman looks at a woman and says, you know, that is the most heartbreaking thing. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Those So are I just think keep your head down, keep working, and in time, it'll catch up. fantastic. Yeah. Fun questions after the hard question? हाँ, What is ज़रूर. more fun? This one or that one? Okay. Zarur. All right. So fun question for you. कभी किसी से सैनिटरी चुपके से मांगी लाइक नहीं चुपके नहीं मांगी पर मांगी जरूर है. हाँ हाँ. क्योंकि हम ये करते हैं अरे स्कूल में तो मतलब क्या करें यार you don't keep a track of when your period's coming, you know, but thankfully my I kind of had an idea because of my mother. She was student, but sometimes you forget, you know, you're running around like crazy kids. What teenager remembers anything, you know? Correct. So yeah, of course you asked in school, yeah, you have a pad, yeah, can you share it with me, please? I remember this. Do you have Oh yeah. ऐसा कोई सवाल था लेकिन पता नहीं था कि किससे पूछें नहीं यार आई थिंक मैं काफ़ी प्रोग्रेसिव स्कूल्स गई थी और मुझे ना बहुत जल्दी और सही वक्त पे सब समझा दिया गया था. बहुत बढ़िया क्रेजीएस्ट मिसकंसेप्शन जो एक फीमेल बॉडी के बारे में खुद को थी खुद को थी. लाइक आई हैव अ वेरी फनी वन प्लीज टेल. मुझे लगता था कि बच्चे जो हैं वो कहीं और से निकलते हैं हाँ ऑफ कोर्स. नहीं कि बच्चे एक्चुअली आपके गट के अंदर होते हैं, पेट के अंदर. ये मिसकंसेप्शन मुझे ज़रूर था जी. दैट बच्चे वहाँ होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली यू नो In a sac inside you, called the uterus. पेट के अंदर होते हैं बच्चे. बिल्कुल किसी हेल्थ सिम्टम को कभी इग्नोर किया एंड पेड अ प्राइस फॉर इट लाइक अ पीएसए लोगों से कहना है कि प्लीज ऐसे मत करो आई थिंक विद योर बॉडी जो है ना बहुत ही सही मशीन है. वो आपको सारे साइंस देती है, पर आई थिंक उसके लिए थोड़ा क्लूड इन होना होता है. जब आपको आपकी बॉडी कुछ कह रही है, चाहे वो 2 दिन का सर दर्द हो या पेट दर्द हो, बात सुने अपनी बॉडी की, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है. Plenty times I have let work get ahead of health and I have ignored it and then paid a heavy price. So ये तो मेरा आखिरी सवाल था which is one piece of advice you would like to give girls listening watching show following Saba Azad at this point saying we look up to you उनसे क्या कहूँगी one piece of advice about pertaining to health
I mean, pertaining to this show is that do not be ashamed of talking about your wellness. Do not be ashamed of talking about your sexual health, your reproductive health. You are the source of life, and you should be respected and not to be made to feel ashamed of your bodies or the functions of your bodies. And the female body is a many splendorous, beautiful, beautiful thing, and it should be respected. And if it's not, we need to steal that respect and stand up for ourselves, because it's not going to be handed to us like nothing is handed to women. So, Absolutely. yeah. Woo! I mean, at the end of the interview, I'm like, yes! Are people clapping? Like, please do this. Yes! Amazing. Guys. It's never happened in an interview before, guys. Pleasure to speak to you, as always. Always, man. Because fun. Also very happy. So have lots of fun, and बहुत शुक्रिया ये show देने के लिए, because Thank it goes you. beyond just being entertaining. I think it's a show that you'll stand by. I think even 15 साल from now, Hey, जब हम बातें करेंगे, you'll thanks, be like, man. remember I did that show? Who's Your Gynac? I still stand by it. Thanks, man. Thank you so so much. much. Thank you. हाय, मैं हूँ सबा आज़ाद और मैंने अभी अभी रोहिणी से बहुत सारी बातें की हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू फिल्म कंपेनियन.